welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. सलमान खान का कौन सा जेस्चर सभी फैंस को आ रहा है पसंद? मौनी रॉय ने शेयर करे कुछ अनदेखे विजुअल्स फ्रॉम हर वेडिंग. क्यों आराध्या बच्चन को के पॉप सेंसेशन ब्लैकपिंक लीसा से किया जा रहा है कंपेयर? क्या सलमान खान के भी हैं हॉलीवुड ड्रीम्स? क्या भाईजान हॉलीवुड में भी दिखा सकते हैं कमाल? हॉलीवुड स्टार जॉन ट्रेवोल्टा के साथ सलमान खान के इंटरैक्शन का वीडियो हुआ वायरल. सलमान खान हमली खुद को इंट्रोड्यूस करते आए नजर. भाईजान सलमान खान का जलवा इंडिया में ही नहीं अब पूरी दुनिया में आ रहा है नजर. रिसेंटली सऊदी अरेबिया में हुई एक अवार्ड नाइट पर सलमान खान को पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया और सलमान खान ने इस गुड न्यूज को अपने फैंस के साथ किया शेयर. सलमान खान ने अवार्ड रिसीव करने की इस पिक्चर को शेयर करते हुए लिखा, माई ब्रदर बू नासिर, इट वॉज लवली मीटिंग विथ यू एट टर्की अल शिक. वैसे सलमान खान के इस पोस्ट से ज्यादातर उनका ये वीडियो वायरल हो रहा है ऑन सोशल मीडिया, जिसमें सलमान खान खुद को हॉलीवुड स्टार जॉन ट्रेवोल्टा से इंट्रोड्यूस करते दिख रहे हैं. और इन दोनों स्टार्स को साथ देखकर सलमान खान के फैंस कैन नॉट कीप काम. सलमान खान और जॉन ट्रेवोल्टा की साथ बैठी हुई ये पिक्चर भी वायरल हो रही है. इस पिक्चर में इन दोनों स्टार्स के चेहरे पर मुस्कुराहट दिख रही है. एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा, टू लेजेंड्स. Another fan commented, India's biggest mega star. एक दूसरे फैन ने लिखा, सलमान नाम काफी है. सलमान खान साउथ ईस्ट एशिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है. यहाँ तक कि सलमान खान सऊदी रॉयल फैमिली के भी काफी क्लोज हैं. यही वजह है उन्हें वहाँ हमेशा मिलती है काफी ज्यादा इज्जत. वैसे सलमान खान ने हाल ही में अपने फैंस को दिया एक खास सरप्राइज बाय रिलीजिंग द सॉन्ग डांस विथ मी, और सलमान खान का ये सॉन्ग वायरल हो गया इन नो टाइम. इसके अलावा सलमान खान बहुत जल्द अपनी फिल्म कभी ईद कभी दिवाली की शूटिंग शुरू करने जा रहे हैं और साथ ही सलमान खान फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग को जल्द ही रैप अप करने वाले हैं. सलमान खान के करीबियों के मुताबिक टाइगर 3 सलमान खान की अब तक की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म हो सकती है और इस फिल्म में शाहरुख खान भी नजर आएंगे अपने पठान फिल्म के अवतार में. यानी सलमान खान के फैंस के लिए है ढेर सारा एक्शन इन पाइपलाइन. मौनी रॉय के घर पर पोस्ट वेडिंग सेलिब्रेशंस हैं जारी. मौनी रॉय और सूरज नाम्बियार के फ्रेंड्स उनके घर पर सेलिब्रेशन को रख रहे हैं जारी. मौनी रॉय के गृह प्रवेश और पोस्ट मैरिज रिचुअल्स का वीडियो हुआ वायरल. मौनी रॉय और उनके दुबई बेस्ड बिजनेसमैन बॉयफ्रेंड ने क्लोज फैमिली और फ्रेंड्स की मौजूदगी में 27 जनवरी को गोवा में की शादी. रिपोर्टेडली पहले मौनी रॉय और सूरज नाम्बियार की शादी हुई मलयाली रिचुअल्स के हिसाब से और फिर इनकी हुई बंगाली वेडिंग भी, जिसकी ढेर सारी झलक सामने आ चुकी है. मौनी रॉय और सूरज नाम्बियार इन शादी के पिक्चर्स और वीडियो में दिख रहे हैं अडोरेबल. मौनी रॉय और सूरज नाम्बियार ने शादी के ठीक बाद ऑफिशियली इन पिक्चर्स को रिलीज किया ऑन सोशल मीडिया एंड वी हैव टू से दे वर लुकिंग लाइक मेड इन हेवन जोड़ी. गोवा से शादी करके जब मौनी रॉय और सूरज नाम्बियार मुंबई लौटे तो एयरपोर्ट पर पैप्स ने किया इन्हें वेलकम और यहाँ मौनी रॉय और सूरज नाम्बियार ने पैप्स के लिए किया पोज. एंड सूरज नाम्बियार even went ahead and kissed the bride.
मुंबई में घर पहुंचते ही मौनी रॉय का गृह प्रवेश किया गया ट्रेडिशनल अंदाज में और बनारसी साड़ी में मौनी रॉय लग रही थी सुपर क्यूट। इसके बाद मौनी रॉय और सूरज नाम्बियार ने खेला ये स्पेशल गेम ऑफ फाइंडिंग द रिंग, जिसमें एज एक्सपेक्टेड फियर्स कंपेटिटर मौनी रॉय की हुई जीत। वैसे मौनी रॉय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपने घर पर चल रहे सेलिब्रेशन की कुछ पिक्चर्स और वीडियोस अपलोड की हैं। एंड इन वन ऑफ हर इंस्टा स्टोरीज उन्होंने अपने बेस्टी अर्जुन बिजलानी के साथ ये वीडियो शेयर किया है। मैंने क्या बोला रोएगी अभी। अरे स्प्रे छोड़ यार अभी। वहीं मौनी रॉय ने अपनी शादी की सेलिब्रेशन की वेडिंग एल्बम से कुछ पिक्चर्स को रिलीज किया है, जिसमें सूरज नाम्बियार और मौनी रॉय एक दूसरे को हग करते नजर आ रहे हैं। साथ ही वेडिंग के दौरान हुई पूरी मस्ती की झलक भी दिख रही है। मौनी रॉय ने इन पिक्चर्स को शेयर करते हुए लिखा, इट्स गुड टू हैव सम गुड टाइम्स। मौनी रॉय और सूरज नाम्बियार की शादी रही एक फेरी टेल वेडिंग एंड वी विश देम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर देयर न्यू इनिंग्स। बाहर अंदर के खड़े बाहर चलो ना। मैंने क्या बोला रोएगी अभी। अरे स्प्रे छोड़ यार अभी। Oh my God, guys! अजब नहीं होना चाहिए शादी। ये ले। बस। ऐश्वर्या राय बच्चन अभिषेक बच्चन की डॉटर आराध्या का ये वीडियो हुआ वायरल। नेटिजन्स को लगता है आराध्या ब्लैक पिंक की लीसा की तरह दिखती हैं। क्या आराध्या भी लीसा की हैं फैन? बिग बी की ग्रैंड डॉटर आराध्या बच्चन रिसेंटली सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी फॉर वन ऑफ हर वीडियोस। इस वीडियो में आराध्या सारे जहां से अच्छा पर परफॉर्म करती हुई दिख रही हैं एंड शी इज लुकिंग सुपर अडोरेबल। लेकिन आराध्या के सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने की वजह है कि नेटिजन्स को लगता है कि आराध्या ऑल गर्ल के पॉप ग्रुप ब्लैक पिंक की लीसा जैसी दिखती हैं। जी हाँ, द सुपर पॉपुलर के पॉप गर्ल लीसा से आराध्या के लुक को किया जा रहा है कंपेयर। एक यूजर ने लिखा, I mean the way she resembles Lisa from BLACKPINK is terrifying, so pretty। एक दूसरे यूजर ने लिखा, She should meet Lisa once in her life. People say there are 7 faces in the world who look alike. यही नहीं, देखिए इन कुछ पिक्चर्स को और आपको भी लगेगा आखिर आराध्या और लीसा का कंपैरिजन क्यों हो रहा है। फर्स्ट पिक, आराध्या एंड लीसा इन अ फ्लावर टियारा। सेकंड पिक, आराध्या एंड लीसा स्माइल। थर्ड पिक, आराध्या एंड लीसा ट्विनिंग इन पोस्चर्स। फोर्थ पिक, Lisa and Aaradhya twinning in crown. Aaradhya and Lisa's cute expression. कुछ इसी तरह के कंपैरिजन पिक्चर्स की सोशल मीडिया पर भरमार है। क्या आपको भी लगता है कि ब्लैक पिंक की लीसा और आराध्या में है ढेर सारी सिमिलैरिटी? वैसे आराध्या के इस वीडियो को देखकर कुछ लोगों को कुछ होता है कि अंजलि की भी याद आ गई। आराध्या है सुपर अडोरेबल और वो अपनी मॉम ऐश्वर्या राय बच्चन और डैड अभिषेक बच्चन की जान है। बात करें ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन की, तो वो पिछले कुछ वक्त से पैंडेमिक के बीच अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को कॉशियसली हैंडल कर रहे थे। जहां ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी फिल्म पोनियन सेल्वल की शूटिंग को पूरा कर चुकी हैं और वो एक इंडो वेस्टर्न प्रोजेक्ट पर जल्द काम शुरू कर सकती हैं, वहीं अभिषेक बच्चन ने अपनी फिल्म 10वीं की शूटिंग को पूरा किया है और साथ ही उनकी फिल्म बॉब बिस्वास एक OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई, जिसे फैंस का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और कुछ वक्त पहले जब एक पॉलिटिशियन मिलिंद देओरा ने अभिषेक बच्चन को वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड एक्टर बताया, तो बिग बी ने प्राउडली इस पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए लिखा, यो बेबी, दैट्स द वे वी डू इट। Coming up on the show, गहराइयां की टीम अनन्या पांडे, सिद्धांत चतुर्वेदी, दीपिका पादुकोण और डायरेक्टर शाकुन बत्रा ने जूम से किया एक्सक्लूसिवली इंटरैक्ट।
Hello everyone, I'm Gehraiyaan and welcome to Speak Easy. My guests today are very special and also unafraid to explore the depths of relationship and especially the flawed ones. Hello, Team Gehraiyaan. How are you doing today? You got a very deep voice. It's very ghetto. बहुत बढ़िया आवाज है. Deepika, you had such a great year. Of course, how can we forget that, you produced and acted in one of the most acclaimed films of the year, with 83, and the kind of love was so overwhelming for you, I'm sure. Long chat with Ranveer about it as well. And then, of course, like I said earlier in the beginning, there's so much acceptance of what you all put out when it comes to this film, which also gives us hope that maybe the audience is not as judgmental and it's not that scary to experiment with your craft as actors, isn't it? Absolutely. In fact, I feel like we're able to make these choices today as actors or as a director or as producers because I think the audience is ready for this kind of cinema. So I think while a lot of it is us wanting to bring new content to an audience, I think a large part of it is also us feeding off the audience and understanding that they're ready for cinema that isn't served to you on a platter. Films that make you think, that are layered, and films where everything is not sort of black and white. It is grey, as is life, and so I think a lot of it also comes from, like I said, the cues that we take from society and from the audience, and what the audience really is ready for. And I think, if anything, the last couple of years, COVID especially, the lockdown, I think all of that has also taught us a lot in terms of what kind of content the audience is ready for. Absolutely. And I would still like to congratulate you on 83. Do you feel like a proud producer for backing stories that I'm sure the world wants to see more of? Yeah, of course. I mean, I think, and especially being an athlete myself and coming from a sporting family, to tell a story of one of the biggest moments in Indian sporting history, I mean, what more can I ask for? And also, I think more than just, of course, there's the achievement part of it, but there's also so much about the human spirit and what all of them had to go through, and it tells you so much more about these people and their experiences, and it's also a human story. And yeah, I think that's the most exciting part about turning producer as well. Sometimes you don't necessarily find a place in a film as an actor, but it still empowers you to tell great stories. Absolutely. And I'm sure there'll be so many more from your side, things like that. This question actually comes from what Ranveer said to me recently. As an entertainer, I take the burden of entertaining. I feel it's my responsibility that anybody I meet, whether through films or otherwise, I want to entertain them. How do you look at yourself as an entertainer? I think in that sense, we're very different people. I think on the burden of being an entertainer, not just in front of the camera, but otherwise as well. Yeah. And I think it's been like that actually for him since childhood. I think he was always sort of used like a, like bacha party mein nacho. It's true. I totally know that. He's, so I think maybe it stems from that. I mean, I'm assuming it stems from that, but he always feels like there's this sort of expectation that when Ranveer arrives, he's going to come with this incredible amount of energy, and I think he's also dealt with the opposite, which is if he's just being himself, which people don't see, people start thinking like he's not okay, like, bhai, is everything okay, and are you not feeling well or something, like if he's not his the self, the side of him that people know. So and that's okay, but having said that, I mean, we're both very, very different people in that sense, and for me, my performance sort of ends when the camera cuts. That's it. And in fact, in large gatherings and social gatherings, I'm the complete opposite. Like, he is comfortable being the center of attention and entertaining people, and I'll be in the corner
very happy just watching and observing people, and I'm absolutely okay with that. Yeah. The scenes that Deepika and you have, even in the trailer, there is this beautiful, passionate, intimate scenes that I think is being also appreciated as really great chemistry. I want to know how is that for you? Because I know there was an intimacy director, but for you to get that perfected and that to be recognized as natural chemistry, even if the film gets released, is a huge compliment. Well, the chemistry is, I think, it's all Shakun. I mean, he kind of made us feel comfortable, and we had a lot of workshops. We had a intimacy coordinator and a director, Dargai and Astha. They, helped us with the process, but that's one thing. But I always feel that for me as an actor, it's very important to kind of, submit, to just go beyond what I'm comfortable in, to, push myself out of the comfort zone. I was signed on Gully Boy 15 days before the shoot. And the chemistry in that with Ranveer is also like, it became a thing, the brotherhood there. And that's what we do as actors. And I'm glad and I'm fortunate to, be working with such great, fine actors. I think it's also them. And I just do my thing, whatever the director tells me to. But I am going to go all in, put all in, and, just have a good time with my co-actors. So that's what we did then. That's what we're doing now. So yeah. And before I move on to Ananya, let me tell you, the internet is blowing up with your chivalrous act of you lending your coat to Ananya, braving the Mumbai cold. Are you aware of that? Yeah, it was very cold yesterday. It was freezing. It was freezing. मतलब मैंने इसको कोट दिया, मुझे भी रियलाइज हुआ कि यार ठंडी लग रही है, तू मुझे वापस दे यार मेरा कोट. The camera didn't capture him stealing it. आपने देखा होगा कि मैं कोट दे के मैं निकल गया था, मैं कहीं झाड़ वाड़ के पीछे छुपा हुआ था, ऐसे कांप रहा था. The best part of the act got captured. Everybody's like, how chivalrous. I mean, we share a very yeah. I mean, yeah. We're doing one more film after this. Yeah, we're doing one more film after this. It feels great, but I feel like the best part about Deepika and my relationship is that we never kind of forced it to be anything. I think whatever it is, it's happened naturally. And I feel like that's why I say we're like sisters, is because you don't choose your family, You kind of have to let that relationship become what it is. And I think that's what happened with us. We've kind of let it take on what it is. I think we give each other a lot of space, but then we also have an incredibly warm relationship with each other. And I feel, especially in scenes that we're doing with each other, I feel like I just have to look at her sometimes in scenes and I feel so much already. So it's just like a blessing to play off of her as an actor also. A quality that you admired in the other person, and a quality that you don't like so much, but you still admire. Why are you looking at me? I'm not going to start. Shakun wanted to start for all four of them, and then they'll do the thing as well. Goofy. Okay. You like that about me, no? Yeah. like. So goofy, disciplined, romantic. Why do you like that about him? He's just like all heart. He's just like, yeah. Is it because of all the romantic Instagram posts of Siddhant? Yeah, S notes. We have a separate log that we keep of S notes that we share when we have to make fun of things sometimes. And Deepika the first, because she arrives on the sets early as well, no? Shakun? Yeah. She is extremely disciplined about everything in her life. So I mean, it's not just one thing. It's about how she approaches a day, I guess. What I don't like. That's so like, I'm scared. I don't know. I mean, it's one of those funny things that we got lucky. I think we got a bunch of really fun people on set. What I don't like. Say it's okay. I'll cry later. No, I mean, I genuinely don't have it, so I don't want to waste your time. So. Okay, fair enough. What I like about Shaq is. Sorry. Shaq. Shake Shack. Gehraiyaan. My height. What I like about Shaq is that he has this quality of, he really is curious about people, and he's very inclusive about everyone. He makes an effort kind of to make sure everyone's included, and it's not an effort when it comes to him. Like, he's genuinely that person. About DP,
what I like about her is she's brave in every way, with all her choices, with what she says, with everything. She's just brave. Sidley, he's funny. He's really funny, and he's himself. And I think he's also he has a self-check, a very strong self-check. Does that make sense? That even I don't feel anything bad about anyone.